हेलो एवरीवन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू क्लास टी आरंभ करवा सो ता आगु ये रिक्वेस्ट कि समस्ते समस्त शेयर कर दे समस्ते एंगेज हे सो दैट क्लास टी आम आगू बढ़ेवा आज पॉलिटी पढ़ा पॉलिटी रो एमसीक्यू गुड़ा करवा जल्दी जल्दी शेयर कर दिवा प्लीज लाइक करो जो मैंने अच्छो प्लीज कमेंट करो शेयर कर दिया प्लीज समस्त शेयर करो सो दैट जल्दी जल्दी समस्त जॉइन हो है ना सागे सागे आरम्भ करवा क्लास साउंड क्लियर अच्छे समस्त आम ऑडिबल हो ऑनलाइन जो मैंने अच्छे को साउंड क्लियर अच्छे ना कौन सी डिस्टर्बेंस तो नहीं साउंड रे यस सर वेरी गुड इवनिंग सोनाली प्लीज शेयर करो तुमको वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग 1 सेकंड गिव मी 1 सेकंड साउंड टिके मतलब क्लियर अछि फ्लक्चुएट ओके आई थिंक एबे समस्त साउंड क्लियर थी साउंड क्लियर अच्छी नॉइज आसुनी प्रीति नायक वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड प्रणाम हाँ प्रणाम प्रणाम समस्त शेयर कर दियो प्रीति तुम फ्रेंड्स मान को समस्त को सो दैट से भी एंगेज हे आम ऑर्गेनाइज भी जानवे है ना आउ चलते आरंभ करवा क्लास टी आगर समस्त को गुड इवनिंग आउ समस्त भलर थे मुझे आशा करुँची एंड आज पॉलिटी क्लास टी बहुत भल से आगे बढ़ो प्लीज लाइक करो प्लीज कमेंट करो हाँ प्लीज सब्सक्राइब करो ओके क्लास केमती लगुच समस्ते कमेंट बॉक्स में लिखो राइट चलो आरंभ करिया द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिमांड फास्ट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू को प्लान द्वारा ये ना
ये भीतर को प्लान क्रिप्स मिशन अगस्ट ऑफर कैबिनेट मिशन प्लान माउंट बेटन प्लान ओके या भीतर को ऑप्शन रहिबो जोटा कि द्वारा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से जगह फास्ट एडॉप्ट करा जो ब्रिटिश मान द्वारा हला कोन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ऑफर द्वारा सेटा को हमें फर्स्ट एडॉप्ट कर ब्रिटिश माने यार आंसर कोन हो सोनाली प्रीति आ जो मन ऑनलाइन रहतो समस्त यार आंसर दे दो जो मैंने यार आंसर दे परियो मो एक्चुअली सीरियस हो है ना प्लीज अगस्ट ऑफ 1940 वेरी गुड है ना अगस्ट ऑफ 1940 है ना राइट आंसर हम अगस्ट ऑफ 1940 आंसर कौन हम अगस्ट ऑफ 1940 है ना ऑप्शन सी वेरी गुड देखो who was the temporary chairman of the constitution assembly okay temporary मन रखियो होला temporary chairman of the constitution assembly during the first meeting रे जो हमर constitution assembly सेतिर ଗୋଟେ फर्स्ट चेयरमैन थिले जे कि टेम्पररी पीरियड पे थिले तांको ना कोन मोस्ट आस्क क्वेश्चन एग्जाम रे मोस्ट पचारे बहुत पचारे है ना वेरी गुड आंसर बी हो सचिन नारायण सिन्हा वेरी गुड ऑप्शन बी वेरी गुड प्रीति 1946 डिसेंबर 9 हाँ 1946 डिसेंबर 9 अच्छा देखो राइट आंसर हो जेटा सचिन नारायण सिन्हा वेरी गुड आंसर दी जण देखो आउ सब कुआडा गले सब पिला के कुआडा सब दुसना दी जण आछन आज हैं ना ऑनलाइन अछन कि आंसर दो डरछन सब देखो हु वाज द यू नो हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए परमानेंट हेले टेम्पररी थे सचिदानंद सिन्हा किंतु बर्तमान आम तो परमानेंट को व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बी आर अम्बेडकर राजेंद्र प्रसाद है राइट आंसर कौन हुआ भीतर है राजेंद्र प्रसाद वेरी गुड दी जन का बहुत कंपटीशन में बढ़िया आंसर दो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे ओके आउ राजेंद्र प्रसाद आउ गोटे रोल से जगह सी गोटे पूर्वर को ऑफिसर थे है को ऑफिसर थे से प्रथम जो जानते टिके को डिपार्टमेंट को ऑफिसर रूप से अपॉइंट थे राजेंद्र प्रसाद है ना सर ऑफिसर को मेंबर रूप है को मेंबर प्रथम को मेंबर रूप से अपॉइंट होते है सी आग राजेंद्र प्रसाद जदि जानी तो आंसर दियो हाउ मेनी मेंबर्स वेर इनिशियली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रारंभिक रूप से केते जन से जगह मेंबर थिले तार आंसर कौन हो राइट आंसर कौन हो 299 389 245 415 389 वेरी गुड आउ कुआड रह गलो प्रीति कुआड गलो आंसर दियो जल्दी जल्दी थ्री 389 सर वेरी गुड राइट आंसर इज 389 है 389 ता विषय की जान दवा 389 the constitutional assembly in India was initially comprised of 389 members 292 were elected by the provincial legislative assembly important ए मन रख ए नंबर गुड़ा लिखा है ना ए गुड़ा भी समस्या मन रखला 93 represents from the Indian princely state रो 93 से रिप्रेजेंट करले 4 जन रिप्रेजेंट चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस है 4 जन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस रो जगह रिप्रेजेंट करते है एति जिनस ए तीनटा जो नंबर रहिला ए तीनटा देखु मन रखला कारण एग्जाम रे सेटा पचार दो कारण सेटा कॉमन लागला हैला तो ए टाइप रो पचार दे पारे पचार देउची मो हैला तो एटा पे प्रिपेयर था सब जिनस पे है ना नेक्स्ट देखो द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम इंडिया वाज फर्स्ट एडॉप्टेड बाय है ना किए प्रथम सर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे आइडिया देते जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी एम.एन. रॉय राइट आंसर कौन हो गया सोनाली एंड प्रीति एंड एम.एन. रॉय वेरी गुड एम.एन. रॉय सर ओके राइट आंसर इज एम.एन. रॉय है ना एम.एन. रॉय द आइडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम.एन. रॉय 1934 डेट टा मन रखिता समझता 1934 ओके केबे 1934 एंड लेटर एडॉप्टेड बाय द इंडियन कांग्रेस है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस इट इज मींस ऑफ द इंस्टीट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द पीपल्स विल है ना रेदर देन बीइंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड ओके लोगों को इच्छा पे ही से जगह प्रमोट करा जाउची जिनस मुख्य जिनस हला देन देखियो द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन व्हिच लेटर बिकम द बेसिक्स of the preamble was moved by है ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का द्वारा मूव करा जाइतला हला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का द्वारा मूव करा जाइतला प्रथम या भीतर आंसर दियो
बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद किए या भितर राइट आंसर कौन हम किए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा कि परवर्ती परिप्रेक्षी आम देखा बी आर अम्बेडकर नो नो यू आर रॉन्ग प्रीतिवाद राय कौन जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा आसला पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आम कौन हम प्रिएम्बल रूप से आगे कौन आसो पर से प्रिएम्बल रूप में अणाज है ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन राइट से किए आगे बढ़े जवाहरलाल नेहरू से बढ़े है किए बढ़े जवाहरलाल नेहरू से आगे प्रोसीड करते बी आर अम्बेडकर हे ना ये राइट आंसर है देखो द रेगुलेटिंग एक्ट है द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना केबे रेगुलेटिंग एक्ट पास करा जायतला 1773 1784 1785 सॉरी 1858 1935 ओके यस सर ओके कृतिवास मुर्मू कृतिवास वेरी गुड इवनिंग कृतिवास है ना प्रीति 1793 वेरी गुड 1773 सॉरी 1773 ओके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लैंडमार्क समस्त मन रख दे होला रेगुलेटिंग एक्ट रे कौन कौन सब हेतिला से जिन सब भीतर आगु जानिबा देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एम टू आ भीतर कौन हो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता क्रिएट द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल द रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी या ऑल ऑफ देबो यार आंसर कौन हो राइट आंसर कौन हो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रो मूल काम कौन थिला से जगह कौन से जगह अछि कृतिवा सर आंसर दियो जल्दी जल्दी प्रीति सोनाली ऑप्शन डी वेरी गुड कृतिवास कौन गले अच्छा राइट आंसर ऑफ द कौन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तीन टा प्रोविजन राइट अच्छे कौन एस्टाब्लिश सुप्रीम कोर्ट है ना ता सहित हूँ क्रिएटिंग ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी राइट आंसर हूँ ऑप्शन डी ओके ता व्यतीत आउ गोटे क्वेश्चन समस्त पचार जो सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिशमेंट होता कलकत्ता तार प्रथम चीफ जस्टिस किए थे है 1774 है किए तार चीफ जस्टिस थे तार आंसर दिला हु द CJI ओके CJI किए थे से जगह प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता किए थे से जगह जल्दी जल्दी आंसर दियो बहुत क्वेश्चन ये पचारे सोनाली तुम्हें तो यहाँ दब एक्सपेक्ट कर आंसर दब तुम्हें है ना देखो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल of India under the regulating act 1773 what going to show sir eligible play very good प्रीति very good answer तुम्हें बहुत बड़े आंसर दिलो है ना eligible play है ना अच्छा गोटे जिन दियो गोटे चीफ जस्टिस थिले है ना तापर आ केते जण तार सबऑर्डिनेट थिले से आंसर कहयो गोटे चीफ जस्टिस थिले ता सहित केते जण सबऑर्डिनेट जज थिले केतेरा जानिचो हां eligible play बहुत लेट दला आंसर प्रीति आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू केते जण थिले मने पड़ुनी ओके ओके चौसत नहीं अच्छा देखो यार आंसर दियो कौन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है यार आंसर दियो एडर आंसर ऑप्शन बी वाराणसी सिंह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वेरी गुड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाराणसी सिंह थे से टाइम 1773 रे राइट The Charter Act of 1813 allowed the which group to enter India for missionaries activity है चार्टर एक्ट 1830 रे डेवलपमेंट देखिए मतलब किसी मिशनरीज को इंडिया को आसले है ना कि एक्टिविटी को बढ़ाया है ना कौन आर ऑप्शन आंसर कौन हो यार आंसर ब्रिटिश ट्रेडर्स क्रिश्चियन मिशनरीज फ्रेंच मर्चेंट्स पोर्तुगीज सेटलर्स कौन वन क्रिश्चियन मिशनरीज वेरी गुड वाट गले प्रीति राइट आंसर हो क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए चार्टर एक्ट 1813 रे कौन लिखा क्रिश्चियन मिशनरीज में इंडिया को आसते
कि से जगार निजर ख्रीष्टियानिटी को प्रमोट करने आसते सा विसार कहीकि ना सेते बेले ब्रिटिश राज चली से माने तांको इच्छा रे सब करुतिले वेरी गुड बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन देखो वेरी गुड एक्सप्लेनेशन देखो क्रिश्चियन मिशनरीज विषय देखी दियो ठीक तो द एक्ट expressly asserted the crown's sovereignty. The British India allotted that 1 lakh rupee annually for improvement of literate scientific knowledge and Christian missionaries मान से पठेइले प्रोपेगेंड इंग्लिश एंड दे रिलीजन को से प्रमोट अच्छा जिंस कोटे जिंस मन रखिताओ ए जिंस रखा गला कि जो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट से लक्षे टंका से अलॉट करथिला काको इंडियन गवर्नमेंट को से जगह इंडियन एजुकेशन को है ना इंडियन रे इंग्लिश रे एजुकेशन को प्रमोट करिया पई है ना तापर को टाइप रे तंकर चिंताधारा बदलाय पई से जगह रे कोन करा गला कि इंग्लिश रे एजुकेशन अथवा वेस्टर्न एजुकेशन से प्रमोट करे पई 1 लाख रुपए रो सैंक्शन से जगह करथिले ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना ताप सहित आउट जिंस डेवलपमेंट देखिया मिता क्रिश्चियन मिशनरीज मतो से जगह आस्थिले सो जगह से जगह प्रमोशन करियो इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट पई सर वेरी गुड नॉट ओनली इंग्लिश एजुकेशन से माने भाबुले से माने चला कि आ अनुसरस्ते गाँव रो उड़ी आई देखो हुई चार्टर एक्ट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया हला को चार्टर एक्ट या भितर जोटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी रो ट्रेड मोनोपोली को बंद करथिला हला एक्सेप्ट वन थिंग गोटे जिंस छाड़ी के आउ सब हला चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट ऑफ 1813 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1858 या भीतर राइट आंसर कौन हो सोनाली एंड प्रीति दुई जन आंसर जल्दी जल्दी दियो अन्य सब पिला कोड गले सब कोड गले रे एटीन 13 वेरी गुड चार्टर एक्ट 1830 इज द राइट आंसर हला राइट आंसर चार्टर एक्ट 1813 कौन ता द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड मोनोपोली बंद कर दला जहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी से जगह कौन करते निजर ट्रेड जहाँ भी ट्रेड कर पारथला वेस्ट को जहाँ ट्रेड कर पारथला से जिन सब बंद अफियम धरिक स्पाइसी सब बंद जो तार ट्रेड राइट टाक से जगह बंद कर दिया गला तुम जहाँ भी किसी कर केवल टी एंड ट्रेड विथ चाइना गोटे जिनस को छाड़ी आ सब जिन बंद कर दो चार्टर एक्ट 1830 है कमर्शियल जहाँ भी बंद करदेला ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट वन थिंग ट्री एंड ट्रेड विथ चाइना है देखो देखा कारण चा से बहुत पसंद करते ना से समय है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या भितर आंसर दे दिली यार आंसर दे दिली एटा छाड़ो सहज हो आंसर किसी या देखी दूसरी चार्टर एक्ट 1833 कौन देखला अन्य नाम हूँ सेंट हेलेना एक्ट 1833 है राइट आंसर हूँ कौन यहाँ एक्चुअली यार ये हूँ कौन सेंट हेलेना एक्ट 1833 वाज द आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड इट मे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कौन आसला इंग्लैंड रे ट्रेन वगैरह जहाँ सब डेवलपमेंट होता से जगह है तो देखिए इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड हिम एज सिविल एंड मिलिटरी पावर कौन दि जाता 1830 आम 1833 रे कौन देता सिविल एंड मिलिटरी पावर देता कौन देता सिविल पावर एंड मिलिटरी पावर से जगह प्रोवाइड करता लॉर्ड विलियम बेंट्री वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थे लॉर्ड गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड विलियम बेंट्री वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस ए प्रोविजन अच्छा यार आंसर दो प्रोविजन तो एस्टैब्लिश ए लॉ मेंबर इन द गवर्नेंस काउंसिल ओके फिर यार आंसर कौन हम जिते जन देखो प्लीज लाइक करो शेयर करो कमेंट करो है ना जिते जन देखो राइट आंसर हो कन्फ्यूज हो सर कन्फ्यूज कौन यहाँ 1833 होला चार्टर एक्ट 1833 वाज इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नमेंट काउंसिल है कौन एस्टैब्लिशमेंट कर लॉ मेंबर एस्टैब्लिश गवर्नर जनरल काउंसिल कौन कर गवर्नर जनरल काउंसिल लॉ मेंबर से एस्टैब्लिश कर
The Charter Act of 1853 introduced the concept कौन इंट्रोड्यूस करा जाता चार्टर एक्ट 1853 रे या भितर को जिनसटा को सेरा प्रोवाइड करा जायतिला 5 जन देखु तो जने लाइक कर यार 5टा लाइक तो आसबार अच्छी 5टा लाइक आसु ऑप्शन कौन होबार ऑप्शन ए सेपरेट इलेक्टोरेट हम कि ना ना यार आंसर हम बी है ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया है इंडिया रे प्रथम थर ओपन रूप में कौन है सिविल सर्विस जोटा कि आम बर्तमान यूपीएससी देचे है यूपीएससी दौर है ना ओपीएससी दौर आईएएस ओएएस है ना आईपीएस है ना ये जो एग्जाम रहा ये सब से टाइम को इंडियन सिविल सर्विस से जगह कहते आईसीएस कहते तो से जगह ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करते बहुत कष्ट थिला से जगह खास कर इंडियन मान से कष्ट पड़ते से चाहूले कि इंडियन माने केबे भी से जिनस कर न पारत अच्छा आ गोटे क्वेश्चन पचार प्रथम इंडियन सिविल सर्वेंट किए इंडिया है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया रो प्रथम सिविल सर्वेंट किए जी कि आईसीएस टाको क्रैक करते कमेंट बॉक्स रे लिख जल्दी है प्रीति एंड सोनाली कमेंट बॉक्स यार आंसर राइट आंसर कौन हम से लिख है प्रथम किए थे जी कि आम यहाँ को ये करते क्रैक करते देखो दो कॉम्पिटिटिव जो ओपन कॉम्पिटिटिव और द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन द चार्टर 1853 इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ओपन कॉम्पिटिटिव और द रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्विस इंक्लूड द इंडियन in an Indian civil service ICS. It also separates the legislative and executive functions of the governance council. Okay. How would you so it Charter Act 1853 development देखे मिलता कौन देखे मिलता गवर्नेंस काउंसिल भी अलग है कौन सेपरेट कर लेजिस्लेटिव और एक्जिक्यूटिव हाँ एक्जिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दुई जोड़ा को सेपरेट कर अच्छा वर्तमान मध्य को सत्येंद्र नाथ टेगोर ओके वेरी गुड राइट आंसर देखो प्रथम जिन लेजिस्लेटिव एक्जिक्यूटिव को केते नंबर आर्टिकल अच्छे आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते नंबर आर्टिकल जोटा कि आम लेजिस्लेटिव एंड एक्जिक्यूटिव फंक्शन सॉरी हाँ जुडिशियरी है ये जो सॉरी एक्जिक्यूटिव जुडिशियरी ये दुटार फंक्शन को अलग करते ना को ये केते नंबर आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि लेजिस्लेटिव एक्जिक्यूटिव जुडिशियल पावर अलग करछे ना डिफरेंट करछे दुटा को केबे मिसोनी समस्त डिफरेंट डिफरेंट जुडिडिक्शन डिफाइन करछे ना केते नंबर आर्टिकल देखो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रो आ किसी स्पेसिफिक पॉइंट देखे देबा कौन से ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये रे The Charter Act 1853 shifted from a system of patronage of merit-based system of civil servant, making as including Indians मानू तो भीतर नहीं Indian मानू सीधा करें Article 50 very good है एम ये तो प्रथम चला सेपरेट प्रोविजन पावर्स कौन लगाला सेपरेट लेजिस्लेटिव एक्जिक्यूटिव से जगह अलग करागला एंड मेकिंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द मोर स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को आउ भल भाव एनहांस करा से फोकस कराला इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो गठन करागला एक्ट एस्टैब्लिश ए सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर गवर्नर जनरल लेटर नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके लोकल रिप्रेजेंटेटिव लोकल इंडिविजुअल लोकल रिप्रेजेंटेटिव इंडियन काउंसिल जी लोकल थे से प्रथम थर से जगह इंट्रोड्यूस कर तार की फीचर्स रहा है नेक्स्ट देखिए कैबिनेट मिशन प्लान केबे आसला कैबिनेट मिशन प्लान केबे आसला कैबिनेट मिशन प्लान केबे आसीथिला Nineteen 46 very good 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान प्रथम थर पे आसला कैबिनेट मिशन प्लान आसला है ना The cabinet mission plan was introduced in 1946. Specifically, it was made of public in May 16, 1946. At a date amount of May 16, 1946, the cabinet mission and the Viceroy Lord Wavell
was outlined the constitutional proposal for the India following failure of earlier attempts to the reach agreement between the India and political parties. Objective rohila kon avitro cabinet mission plan sent to India, devise a new formula for transforming power. Okay, से टाइम रे वर्ल्ड वार सिचुएशन चलता रहा, वर्ल्ड बहुत गुड़े डेवलपमेंट देखा जाता है, से टाइम रे कौन करते ब्रिटिश को फोर्स करा जाता है कि तुम चलो से मैं कौन करते हैं ट्रांसफर कर देखो वर्तमान मत गोटे जिन कौन आम जीति ये किंतु जीति न से जगह ट्रांसफर होता पावर है आम इंडिया इंडिपेंडेंट जो है इंडिया ट्रांसफर पाइला क्या पाखु ब्रिटिशर्स मान ट्रांसफर पाइला आमर इंडियन सॉरी इंडियन ये है ना जहाँ भी आम बर्तमान इंडियन और पाचे है ना से आम ट्रांसफर पाई से पावरटा आम ट्रांसफर होगा आम जीति ना लड़ी ये ना ना आम से ट्रांसफर हो पावरटा है मन रखी एंड एमिंग कॉल एस्टाब्लिश ए फ्रेमवर्क फॉर ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट. ओके कौन तार एम थिला कि आगु फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टा कोटा डेवलप करा तो गवर्नमेंट टा कोटा फिर फॉर्म करा जिवो हला. हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हला. कॉन्स्टिट्यूशन रा ड्राफ्टिंग कमिटी हेड के थिले बी आर अम्बेडकर. वेरी गुड. राइट आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ताकर गोटे आत्मजीवनी अच्छी ताकू मु तो कहबी तुम गोटे थर देख है ना से केते स्ट्रगल करथिले है ना से जिनस गोटे देख डेफिनेटली रेडिकल लेके देख न देख कि एक्चुअली शिखबार अच्छे किसी है ना देख ना पढ़ है ना. तो देखो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक हाउ मेनी डेज टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन. ओके केते दिन लगी है केते दिन लगी 3 वर्ष 4 वर्ष 2 वर्ष वर्षे केते समय लगी आंसर दियो जल्दी जल्दी. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन टा बनया पे केते समय लगी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन. वेरी गुड वेरी गुड. ऑप्शन है इज द राइट आंसर. 2 वर्ष 11 मास 8 दिन लगी समय कॉन्स्टिट्यूशन टा फ्रेम होगा. ओके देखो द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एक्सटेंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर फॉर हाउ मेनी इयर्स. केते वर्ष पाई से जगह रे चार्टर एक्ट 1793 एक्सटेंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर्स केते वर्ष पाई से जगह एक्सटेंड करथिला. 40 30 20 10 10 इयर्स 20 इयर्स ऑफ 20 इयर्स. देखो प्रति गोटे जिन मन तो प्रति चार्टर एक्ट है प्रति चार्टर एक्ट भितर 20 वर्ष डिफरेंस था है प्रति चार्टर एक्ट भितर 20 वर्ष डिफरेंस था. 20 वर्ष से एज ए ट्रायल फेज नौते है तो ब्रिटिश मैंने बहुत चालाक थे तो 20 वर्ष धरी से प्लानिंग कर चलते. तो देखो ताकर प्लानिंग केते बड़ नथा है ताकर गोटे कम्प्रेहेन्सिव प्लानिंग थिला जो प्लानिंग से प्रति 20 वर्ष थरे चार्टर गुड़ा रिव्यू करते ना कौन डेवलपमेंट है कौन डेवलपमेंट है कौन डेवलपमेंट है तो से प्रकार माइंडसेट टाक देखो ना 20 वर्ष ना 20 वर्ष है 10 ईयर हेनी प्रति 20 ईयर को है देखो तार पीट्स इंडिया एक्ट 1784 एस्टाब्लिश होता कौन होता कौन होता ये कौन होता पीट्स इंडिया एक्ट 1784 रे एस्टाब्लिश को जिनस एस्टाब्लिश होता से. ओके ओके बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट. अरे सुप्रीम कोर्ट तो आम ये कहले ना 70 ये चार्टर एक्ट होता बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश है. देखो राइट आंसर ये हम कौन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहीदेवी है कि डिटेल है बोर्ड ऑफ कंट्रोल से जगह ब्रिटेन रही से कंट्रोल करते है. देखो आंसर हम ऑप्शन ए कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन है ऑप्शन ए है कौन रहा आंसर. पीट्स इंडिया एक्ट 1784 कौन हम क्रिएट ए न्यू बॉडी नेम बोर्ड ऑफ कंट्रोल. कौन बड़ नुआ बॉडी तैयार कला बोर्ड ऑफ कंट्रोल है. बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कौन से देखा पॉलिटिकल अफेयर जहाँ भी पॉलिटिकल अफेयर रहा किए मैनेज कर बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ओके कमर्शियल अफेयर जहाँ भी कमर्शियल अफेयर रहा कमर्शियल अफेयर रहा से किए कर कोड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके किए कर कोड ऑफ डायरेक्टर्स से रेगुलेट कर कोड ऑफ डायरेक्टर्स. देन देखा द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. ओके देखो ये दुटा जिन इंपोर्टाट तो ये दुटा जिन मन रखिद है जल्दी जल्दी लिखिद जब नोट बनाओ भल कथा.
The which chapter is which act transfer the government of India from the East India Company to British Crown? Very good. Government of India 1850 ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1858 କ'ଣ ହେବ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर कर दो सब पावर को ब्रिटिश क्राउन को है ब्रिटिश क्राउन को है तो 1857 रे कौन हम 1857 गोटे डेवलपमेंट देखा जाइए इंडिया से कौन कौन तार नाटा कौन 1857 गोटे जिनस होता तार ना कौन जो जिनसा कि जिनसा है सोनाली प्रीति आई एक्सपेक्ट बोथ ऑफ सिपाही विद्रोह सिपाही म्यूटेनी स्टॉम सेंटर टा कौट आरंभ होता मंगल पांडे तो राइट एटा हूँ कौन सिपाही विद्रोह सिपाही म्यूटिनी आरंभ होता जोटा जो कि आमर से जगह देखा मिलता 1857 वेरी गुड सिपाही म्यूटिनी हवा फल से जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कला कि सेड रही कि ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे खराब कंपनी आमे आसचु एत गोटे रेगुलेट कलापर आमे आसचु बहुत भल काम करूँ आमे हूँ भल लोक है तो से जगह क्राउन भल हो आइला से जगह डेवलपमेंट विभिन्न प्रकार नीति नियम आपर से डेवलपमेंट कर कहूला देखा The Government of India Act 1858, the Government of India Act 1858 transfer the Government of India from the East India Company to British. This also abolishes the Board of Control and Court of Directors. Okay. आउ दीटा जिनस कौन बंद करिवो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ए दीटा को बंद करिवो ए एक्ट है एक्ट ऑफ 1858 है कौन बंद करिवो एबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है इफेक्टली एंडिंग एंड ईस्ट इंडिया कंपनी रूल है से जगह ईस्ट इंडिया कंपनी रूल टा को बंद करा जिवो क्राउन रूल आरंभ होला कंपनी रूल सरला एबे क्राउन रूल से जगह आरंभ होला आ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दीटा फेल होवार कारण एटा रहला से माने जदी तमे गोटे उदाहरण स्वरूप तमे घरे बसिकिरी जदी कहयो कि मो गाड़ी चलेबी हाईवे रे देन से जिनस पॉसिबल नै से टाइप रो माने इंडिया रे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये कोर्ट रे काम कर ब्रिटेन रे रही इंडिया रे कंट्रोल करी चेष्टा करते ना आजिकल तो टेलीफोन अच्छी टेलीग्राम अच्छी है ना मेसेज इमेल भल मंद अच्छे से टाइम से जो किसी ना गोटे चिट्ठी जी 6 मास लगता तो से जगार गोटे चिट्ठी ये आसला समय हो जाऊला है तो से गोटे फेलियर कारण गोटे मुख्य कारण हूँ यहाँ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 allotted हाउ मच मनी annually फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कहीदे क्वेश्चन कि आगुरी यहाँ को अन्य गोटे क्वेश्चन आम सल्व करते राइट आंसर कौन हम जल्दी जरा आंसर दियो 1 लाख वेरी गुड 1 लाख रुपीज हो गए 1 लाख रुपीज कौन पे देले एजुकेशन को प्रमोट करने इंडिया है ये एजुकेशन को प्रमोट करने इंडिया से टंका देवी भाभी दे ना समस्त भल ना देवी देवी कहते दे ना देवी मंदिर थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ओके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर किए थे से टाइम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास होता राइट आंसर कौन हम या बेंजामिन डर्सेल रोबर्ट वालपोल लॉर्ड नॉर्थ विलियम पिट नो विलियम पिट सब ना विलियम पिट सब ना नो इट इज नॉट विलियम पिट लॉर्ड नॉर्थ हमार आंसर लॉर्ड नॉर्थ होगा यार आंसर हम लॉर्ड नॉर्थ होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भर कौन सा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल ब्लेंड ऑफ बोथ कंप्लीटली फ्लेक्सिबल राइट आंसर कौन हम यार
বি বি হব বলছো অপশন সি হলা इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल दीटा इंडिया कौन है रिजिड है ना एंड फ्लेक्सिबल ओके दीटा जाक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ बेंड दुईटा जाकर मिश्रण कहले चले है चले कौन मिश्रण ही है कौन एटा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेदर एंटायरली रिजिड नेदर एंटायरली फ्लेक्सिबल ओके इट इज ए ब्लेंड ऑफ बोथ सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड विथ ए सिंपल मेजॉरिटी है किसी प्रोविजन आम सिंपल मेजॉरिटी द्वारा जगह कर पार्लियामेंट अदर रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी किसी जिनस स्पेशल मेजॉरिटी दरकार एंड यू नो एक्टिवेशन ऑफ बोथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर दरकार जोटा कि आमर स्पेशल मेजॉरिटी रही है ये नाउंस द अप्रोच अलाउ द ये नेसेसरी चेंजेस व्हाइल सेफगार्डिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है कौन सेफगार्ड कौन कर फंडामेंटल प्रिंसिपल को आमर सेफगार्ड कर देखो कौन है कि एत बड़ कंट्री को रेगुलेट करने केवल रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से जगह काम देवें जमी आम ब्रिटिश पार्लियामेंट कहुए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो मरी जाता सबक मत जिंदा करदेव है से टाइप तो से टाइप ना मैंने एत स्ट्रंग रिजिड हवा दरकार ना है आ यूएसए बोले एत फ्लेक्सिबल भी हवा दरकार नहीं है ना यूएसए बहुत फ्लेक्सिबल था तो से बहुत फ्लेक्सिबल इंडिया हूँ कौन बहुत रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ओके इंडिया बहुत रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है यहाँ किसी स्पेशल डाटा लिखाई तो सेटा मुझे डिस्कस करदेवी है ना देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट मोस्ट रिजिड एंड अनरिटन बी लॉन्गेस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ना लॉन्गेस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन मध्य क्रिटिसाइज कर दिला एटा आंसर हो बी है वो द कांसेप्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री है फेडरल स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जगह आम बर करे बर अर्थात आनीचे आम को जगह डिराइव है राइट आंसर कौन हम यूएसए कनाडा यूके ऑस्ट्रेलिया कनाडा सोनाली कौन गल आंसर कहीं दौना है देखो प्रीति आंसर दे ठीक कनाडा है कनाडा हूँ जोटा जोटा कि आम बर करचे कौन बर करचे फेडरल स्ट्रक्चर को आम आने फेडरल स्ट्रक्चर को आम आने देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए डेस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके कौ टाइप गवर्नमेंट आम देखा कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी फेडरल क्वाजी फेडरल बोथ यूनिटरी एंड फेडरल ऑप्शन सी क्वासी फेडरल अर्थ हूँ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड वीक स्टेट है द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या भीतर कौटा हम व्हिच फीचर को फीचरटा भीतर फंडामेंटल राइट जुडिशियल रिव्यू डीपीएसपी प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन वेटेज कार रोज को टाइप जिन अधिक वेटेज रही फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू डीपीएसपी डायरेक्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑप्शन बी वेरी गुड राइट आंसर हो ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू ही एमती गोटे जिन जोटा कि आम सुपरमेसी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन रे लॉ रो लैंग्वेज बहुत गुड़ाई रखी है द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यार आंसर कौन हम है जल्दी जानते यार आंसर कौन हम सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम ना केवल सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोवरेन डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक यूनियन सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक मोनार्क्स राइट आंसर कौन हम ए हम वेरी गुड राइट आंसर इज कौन हम सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक राइट आंसर हम यहाँ देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कि द वर्ड सोशलिस्ट एंड द सेक्युलर वर एडेड द प्रियम्बल बाय व्हिच ऑफ द अमेंडमेंट बहुत थोड़ा जिन हम प्रैक्टिस करें राइट आंसर कौन हो यहाँ भितर राइट आंसर 42 42तम संशोधन है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा से जगह सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को ऐड करा जिवो ओके द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी हाउ मेनी फंडामेंटल राइट इन द सिटीजन्स ओके केतेटा फंडामेंटल राइट अछि आगुरु केतेटा थिला एबे केतेटा अछि आगुरु बहुत तरह क्लासटा करा जायछि बी वेरी गुड बी राइट आंसर इज बी 6टा फंडामेंटल राइट अछि ला केतरा फंडामेंटल राइट अछि 6टा ला आगुरु केतरा थिला 7टा थिला ला जोटा कि राइट टू प्रॉपर्टी टाकू काढी गिरी 300 ए रे लीगल राइट कर दिया गला ओके न्यू चैनल माय वर्स न्यू चैनल यस न्यू चैनल मु तुमको जानी पारिली नाही तुम नाटा कोन को हला which part of the Indian constitution deal with the fundamental rights okay कितने नंबर पार्ट हमर फंडामेंटल राइट्स से डील करे है ना पार्ट 5 नु हो पार्ट 5 नु हो पार्ट 3 है Part 3 of the Constitution dealing with the fundamental rights. Okay, fundamental rights है तो Part 3 of the Constitution है ना fundamental right and था पर देखिए fundamental duties कितने पूरी बाजू Part 4 नहीं होगा यार Part 3 होगा Part 3 होगा वाला Part 4 होगा ना Part 3 sorry टिके यार आंसर दिया समझता डीपीएसपी सॉरी ड्यूटीज फॉर हाँ आई जोटा मु ये करती है टिके मोर मिस्टेक हो गला जिनसा है फंडामेंटल राइट टिके मोर ये हो गला पार्ट 4 रही हो है मुझे कन्फ्यूज राइट डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्री आम बोरोड होता है कैन आयरलैंड हाँ वेरी गुड आयरलैंड फंडामेंटल राइट्स टा हमर यूएस रु डिराइव होइछे वेरी गुड है ना आइलैंड डीपीएसपी वेरी गुड 4A वेरी गुड फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर ओके तापर देखिबा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द को टाइप रो सिटीजनशिप हमें से जगह देखिबा हला सिंगल सिटीजनशिप वेरी गुड इंडिया अलाउ कर सिंगल सिटीजनशिप वेरी गुड सिंगल सिटीजनशिप आरंभ आमर है ना डुअल सिटीजनशिप आम इंडिया रे नाही है
हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतरा फंडामेंटल ड्यूटीज होते ना केतरा फंडामेंटल ड्यूटीज होचे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 11 12 9 11 वेरी गुड प्रीति यार आंसर दो वेरी गुड 11 है ना 11 टा फंडामेंटल ड्यूटीज हमरो चला केतरा फंडामेंटल ड्यूटीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हला एवढी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है ना कौन सेपरेशन ऑफ पावर द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी थ्रू कौन सेपरेशन ऑफ पावर फंडामेंटल राइट डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फेडरल स्ट्रक्चर हाँ वेरी गुड ऑप्शन है ना फेडरल देखो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कौन आमर सेपरेशन ऑफ पावर किमती रहिला सेपरेट को टाइप सेपरेशन है देखो सेपरेट है आमर एग्जीक्यूटिव टू अलग है जुडिशियरी है जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव टू दुटा अलग है आर्टिकल 51 जे जिनस कहि एग्जीक्यूटिव टू जुडिशियरी दुटा अलग जिनस है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर एज द यूनियन लेवल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा लोकसभा एंड विधानसभा राज्यसभा एंड विधान परिषद लोकसभा एंड प्रेसिडेंट ये राइट आंसर कौन हम लोकसभा विधानसभा होनी लोकसभा एंड राज्यसभा है बाइकैमरल लेजिस्लेचर होची लोकसभा एंड राज्यसभा ये दुटा राइट आंसर है पार्लियामेंट पढ़ेला बेलू ये जिनसा पढ़े एंड थैंक यू एवरीवन आज क्लास ये बहुत गुड़े स्टूडेंट जॉइन होते जमी सोनाली आमर प्रीति माई वर्स जी अच्छा ना तो कम्प्लीट डिस्क्लोज करना एंड थैंक यू पार्टिसिपेट करते आमर प्रत्येक दिन 11:30 बेले 11:30 आमर करंट अफेयर्स डेली लाइव क्लास हुए एंड देन देखिए आमर राति 8:30 डिफरेंट डिफरेंट क्लास थाए कि बर्तमान जेहतु कॉम्पिटिटिव बोर्ड बहुत गुड़ा एग्जाम अच्छी तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बोली से जगह मुझे बहुत गुड़ा क्वेश्चन धरिक आसता है ना तो समस्ते थैंक यू है धरिक आसते तो ये दुटा टाइमिंग समस्त मन रखी था ये दुटा टाइमिंग जहाँ भी क्लास हुआ तो है ना थैंक यू एवरीवन प्लीज लाइक कमेंट शेयर है ना थैंक यू एवरीवन।